Good morning, children. In previous class I have explained you lesson number 1, the best Christmas present in the world. Now today I am going to explain you the comprehension check number 1, question answer of our textual exercises. Question number 1, what did the author find in a junk shop? Answer, the author found a roll-top desk for sale in a junk shop. It was made of oak wood, but it was in a very bad condition. जो हमारे ऑथर थे उनको जो जंक शॉप थी बच्चों, उसमें से रोल टॉप डेस्क मिला था. उन्होंने वहाँ पे एक रोल टॉप डेस्क देखा था. सो द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क फॉर सेल इन अ जंक शॉप एंड इट वॉज मेड ऑफ oak wood, one type of tree. It was in a very bad condition. Question number 2. What did he find in the secret drawer? Who do you think had put it in there? जो नैरेटर थे बच्चों, उनको सीक्रेट ड्रॉवर में से क्या मिला था और आपको क्या लगता है कि उसको उसमें किसने रखा होगा? सो द करेक्ट आंसर इज in the secret drawer of the desk, the author found a small tin box. There was a letter in it. I think the previous owner of the roll-top desk might have put in there. Now, question number 1 in comprehension check 2. Who had written the letter? To whom and when? जो लेटर था बच्चों वो किसने लिखा था, किसको लिखा था और कब लिखा था? सो द करेक्ट आंसर इज जॉन मैकफर्सन, a captain of British Army, had written that letter dated 26th December 1940 to his wife Connie. Question number 2. Why was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? जो लेटर था वो क्यों लिखा गया था और उसमें कौन सी वंडरफुल थिंग हुई थी? सो आवर आंसर नंबर 2 इज द लेटर डिस्क्राइब्ड अ वंडरफुल इवेंट. द टू आर्मीज, द ब्रिटिश एंड जर्मन्स फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर. कौन सी वंडरफुल थिंग थी बच्चों? तो जो क्रिसमस था वो क्रिसमस की जो इवेंट थी, ये द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स वेर एनिमी ऑफ ईच अदर, दे सेलिब्रेटेड दैट क्रिसमस टुगेदर. दिस वॉज द वंडरफुल थिंग. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव? Our answer number 3 is before they joined the army, Hans played cello in an orchestra and Jim was a teacher. Now comprehension check number 3. Question number 1. Why did the author go to Bridport? ऑथर थे वो ब्रिडपोर्ट क्यों गए थे? एज वी हैव डिस्कस्ड इन अवर लेसन, द करेक्ट आंसर इज द ऑथर वेंट टू Bridport to meet
Mrs. Jim McPherson and deliver Jim's letter to her. जो हमारे नरेटर थे वो ब्रिडपोर्ट क्यों गए थे? तो वो जिम का लेटर मिसेस जिम मैकफर्सन मीन्स टॉनी को हैंड ओवर करने गए थे. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकफर्सन नाउ? वेयर वॉज शी? So I have discussed you this one also, that Mrs. McPherson was 101 year old. That time when the author visited her, she was in a nursing home. Comprehension check number 4. Question number 1. Who did Connie McPherson think her visitor was? जो मिसेस मैकफर्सन थी बच्चों, जो कॉनी थी, वो क्या सोच रही थी कि उनसे जो विजिट करने आया है, जो विजिटर है, वो कौन था? The correct answer is Connie thought that the visitor was her own husband, Mr. Jim McPherson. Question number 2. Which sentence in the text show that the visitor did not try to hide his identity? जो विजिटर थे बच्चों, हमारे जो नरेटर थे, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी हाइड करने का प्रयत्न नहीं किया, आइडेंटिटी हाइड करने की कोशिश नहीं की. तो कौन सा सेंटेंस टेक्स्ट में से जो है जो ये बता रहा है? सो द करेक्ट आंसर इज, दैट सेंटेंस इज आई सैट डाउन बिसाइड हर. दिस ही डिड इन रिस्पॉन्स टू हर रिक्वेस्ट एंड द रिक्वेस्ट वॉज मेड टू जिम. नाउ हियर वी हैव completed our textual question answers comprehension check. Now moving forward, we will see working with the text. Question number 1. For how long do you think Connie had kept Jim's letter? बच्चों, आपको क्या लगता है कि कोनी ने जिम्स का लेटर कितने टाइम तक संभाल के रखा होगा? Give reasons of your answer. So here the correct answer is Connie had kept Jim's letter with her till the house was gutted in a fire. We saw in our lesson explanation that Connie's house had been burnt out. So whenever till the house was gutted a fire, she would surely have been fed the letter's presence until the time she got a bit muddled-headed. Our question number 2. Why do you think the desk had been sold and when? The desk must have been sold when Connie's house had burned. The table had been damaged by fire as well as water. जो कॉनी थी, उन्होंने वो जो लेटर था वो किस में रखा था? The one of its drawer of roll top desk. So जब आग लगी थी तो वो जो लेटर था बच्चों, वो उसके घर में से जो टेबल मिला था, रोल टॉप डेस्क मिला था, उसके एक ड्रॉवर में लगा था. एंड जो टेबल था, द टेबल हैड बीन डैमेज्ड बाय फायर एज वेल एज वाटर. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग conflicts? Do you agree? Here the correct answer of our third question is
both Jim and Hans were soldiers. Jim was from British Army and Hans Wolf was from German Army. Both were warm-hearted and kind-hearted also. They had seen the sufferings of war. उन्होंने देखा कि जब वॉर होता है बच्चों तो जो सब फेस करते हैं, सफ़र करते हैं, वो कितना भयंकर होता है. So they both were warm-hearted. So it was natural for them to hate war. They flavored a peaceful solution to settle disputes. Games or sports, they said, were good ways of resolving conflicts. तो उनका जो वॉर एंड करना था बच्चों, तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या है उनका वॉर एंड करने के लिए? सो हियर दे सेड गेम्स एंड स्पोर्ट्स वेर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स. आई ऑल्सो क्वाइट एग्री विथ देम. क्वेश्चन नंबर 4. What is Connie's Christmas present? Why is it the best Christmas present in the world? Here, dear students, our title of the lesson is the best Christmas present in the world. So here the question is regarding our title. Why is it the best Christmas present in the world? Our answer is Connie thought that Jim had come back home from war. कॉनी ने क्या सोचा कि जो जिम है वो वॉर खत्म होते ही अपने घर वापस लौट आया है. She mistook the author for Jim. During the explanation of our lesson, I have said you dear students that Connie has misunderstood the author for Jim. So here she had been waiting for her husband Jim. So the coming home of Jim was the best Christmas present in the world for her. I hope you all understood this question answer. Here we have completed our textual question answers and working with the language. In our next class, I will explain you further exercise. Till then, everyone, take care. Have a good day. Thank you.